वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। राम राम, सलाम वालेकुम। Jeevan Jaj welcomes all our soul sisters and brothers from all around the world. Jeevan Jaj means a way of life, an emergence of a new society. Our vision is आप सवारे मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। Through this slok, Bhagat Farid ji imparts the secret to reach the soul consciousness that, O mind, introspect your vices, your thoughts, your notions, rather than others, to connect with oneness. I'm Aminder Kaur from Jeevan Jaj Human Empowerment Team. People will don't actually don't throw them back. Collect them. And build them apart. Today's second day of Stone Dynasty, which will be explained by our very loving Vindri ji, who is HOD of Human Empowerment of Jeevan, whom we lovingly call Vaji. She is proficient in 18 healing therapies, and now she imparts the knowledge from scriptures and heals every soul who connect with her. Her warmth and compassion impacts one and all. Over to our loving Vaji. A warm welcome to you all. Good evening to you. Good morning to the overseas. Ram Ram Ji, Wahguru Ji ka Khalsa, Wahguru Ji ki Fateh. So today we are on to the second day of the Stone Dynasty. है बहुत simple. But we human beings are in the habit of actually making it difficult. हर जगह पे. So when we will talk, you'll find, oh, it is so simple. Yesterday, what did we discuss? What did we talk? Just a simple stones outside the body with a myth that we people are governed by them or they are controlling us. Myth was removed that they are not controlling us. We control them. We control them according to our own emotions. So we did this very clear about the crystals, how they grow, how they change the colors. Now, why did we discuss it yesterday? Because we were discussing along with it the Stone Dynasty, which is inside us. Made it very clear that our stubbornness, where we always kick a person, our egoism, the narcissists, the bipolars, they're all very, very strong. Oh, look, just like a stone, it makes no difference to them. It is a need of the hour that we have to understand कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਵਾਕਣ ਵੀ ਬਿਹੇਵ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸਸ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਈਸ ਨੇ ਇਹ ਰੋੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਐਨ ਰੋੜੇ ਬਣੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੋੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੋ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਰੋੜੇ ਪਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸਸ ਹੈਗੇ and this is the one which they say what it was it said that we have to clean sanu ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸ਼ੇਖਫਰੀ says ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਐਮਸੀਡੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਉਸੇ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ the one which is inside है जो हमारे अंदर है ये जो रोड़े है जो टिब्बे है ये the toy है all these uneven ground who is going to clean it because we are falling on our faces and when we fall we are hurt we are very sad and life becomes hell for us so Farid ji says कि ये जो टॉय टब्बे ना इसको एकदम मैदान को सीधा कर so very good what Farid Kabir ji has told us now अगर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ this is spirituality that is why we are going into the new world now as you see on the roads what do we have
We have usually, you see, all a GPS, which immediately now we put, it guides us. कहाँ जाना है? गुड़गांव जाना है, GPS on करो, सीधा गुड़गांव. Then we follow it. We follow it. Don't we? Everyone puts it. So what is the GPS that takes us from body conscious to soul conscious? When it takes us from body to conscious, it means that we are clearing those uneven ground. We are clearing those ground which are all of vices. What are we clearing? किव सचारा हो ये क्यों कूड़े टुट्टे पालो जो कूड़ दी पाले उसको तोड़नी है, उसको इवन करना है, खत्म करना है, मैदान को साफ करना है, साढ़े रोड़े को खत्म करना है. गिरांगे बहुत मुश्किल ना संभाल सकेंगे, बहुत दुखी होंगे, दर्दा होंगे, तो उसको खत्म करने वास्ते they say use the GPS. Use the GPS and find out किथे किथे टिब्बे टोए पे, where are the uneven ground, where are all those blockages, where are all those stones. How do I go on this path to reach my soul conscious? Now, the GPS is what? Walk on the laws of the nature. Those the hukam hai, jo the siddhanta, those the laws of the universe. We have to understand. First step, understand. After we understand it, then we have to walk on it. It guides us. It guides us. Simple thing. If it says the law of the nature, the law of the universe says the law of attraction. What you give, you will get it. इसको drill कर लो, इसी ऊपर चलो कि जो मैं दूंगा मनु वही मिलेगा. It's a GPS telling you. The more you start following this path, you will see that you're going towards evolution. ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ the Tibet ਹੋਏ ਵੀ मैदान साफ हो रहे हैं. Another law, अगर ऐसे कहिए कि जो मैं किया सो मैं पाया, दद्दा दोष न दिया किसी. This is a proper thing. What you sow, so shall you. This is also the law of the universe. GPS. Understand this. It's guiding you. खाली पढ़ना नहीं. Walk on it. किसने चलना है? शरीर ने नहीं चलना, मन ने चलना है. क्योंकि टिब्बे टॉय जो रह गए सारे मन के अंदर है, सब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है गया, और is creating hell for us. So we have to walk on that law. कि understand कि what you sow, so shall you reap. जो करूंगा मैं मन वही मिलेगा. इस करके जो हो रहा है, accept it. Accept it. क्यों? The game starts from me. The law says it is the GPS is guiding you. All these laws are guiding you. Use them as a GPS and start walking on it. मन ने walk करना है, मन जब पैर है कि वो भी walk करा रहे. So walk on it when जब तो मन accept कर लेता है. So that means we have started walking on the GPS, understanding and following it. जिन जिन ਅਸੀਂ follow करेंगे, साढ़े मैदान भी साफ हो जाएंगे और बड़ा कुछ होगा. Now, what are the things that bring in the transformation? How? What is the GPS telling us? First thing it tells us, introspection. We have never learned to introspect. Have you ever learned to? No, we have not learned. ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸੋਚੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਗੰਦ ਫੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰੋੜੇ ਪਏ ਹੋਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ. ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰੋ. is telling you, the law tells you introspection. When you start introspection, then you will start going into what? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ. These are my flaws, these are my stones. ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਓਕੇ ਜੀ, now I have to transform. अगर मैं टिब्बे टोए खत्म करना है, मैदान को सिद्धा करना है, then what I have to use? I have to use my gems. मनो अपने अंदर दे values. I have to use all my virtues. जदों ये मैं लवांगा, तो what will happen? मेरे टिब्बे टोए सारे खत्म, मेरे vices खत्म. Until you do not abide with your virtues, या जिसनों सी रब्बी गुण कहंदे हैं,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਵਾਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋੜੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹਨ, the stubbornness, the anger, all these type of natures that we had, the hard-heartedness, ਇਹ ਸਾਰੇ melt out ਹੋ ਜਾਣਗੇ। Why? Because we have started introspecting and we have started taking in the virtues that are be good. Be very conscious, transformation, be very conscious. Unconsciously नहीं करते जाओ, alert हो जाओ, aware हो जाओ कि एक मनुष्य कितना दुखी कर रहा है अंदर। So what you have to do कि तुहानू बड़े consciously तुहानू इस चीज पे चलना पड़ेगा। Now when we have understood the GPS, so the next says, bring in your acceptance. This is also a law. जितने भी sub laws कीते हो, in 21 sub laws you all have done, go into the YouTube, you will get the 21 sub laws, and these sub laws are where they are the gems जो साडे उस तीरथ, उस ओशन, उस नाम के अंदर पे आया है, जो सानू विरासत में मिले, सानू पता ही नहीं है। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੱਥਰੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ jewels ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, but who start playing with these jewels which are already inside you, which we call the sub laws. Acceptance, once you have understood कि भाई ਅਸੀਂ introspect करना है और साढ़े अंदर the virtues ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, we are going to start collecting all these jewels, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ acceptance, ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, total acceptance, total surrender, कि जो हो रहा है 100% ठीक हो रहा है, क्योंकि बाहर जो भी हो रहा है उसके हुक्म के अंदर, हुक्मे अंदर सब कुछ बाहर, सब तो हुक्म विच ही हो रहा है, कुछ उसके हुक्म तो बाहर नहीं हो रहा। अगर वो बंदा मेरे नाल गलत कर रहा है तो मेरे अंदर इतने वट क्यों पैंदे पे, इतने रोड़े क्यों पाए हुए एंगर दे, इतने गिले शिकवे दे क्यों पाए हैं, इतने टीठ क्यों बने हुए असी कि असी नहीं छोड़ना, क्यों? क्योंकि असी जो बाहर हो रहा है असी उसके हुक्म को पहचानिया ही नहीं कि जो बाहर हो रहा है 100% करेक्ट है, क्योंकि हुक्म के अंदर हो रहा है। अगर वो मेरे नाल गलत कर रहा है, मेरे नाल धोखाबाजी कर रहा है, मेरे नाल कौड़ा बोल रहा है, उसके हुक्म विच ही हो रहा है और 100% राइट हो रहा है। We have to accept because it is a law. What you sow, so shall you reap. The law says कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ So what happens? ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਐਡਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, Yes, Buaji, continue, please. Sorry, servants. So what happens कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਲਾਅ ਹੈ, ਲਾਅ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਵੱਟੇ पे मारते पे, थोड़े हर्डल्स आंदे पे, ਅਸੀਂ एक्सेप्ट कर लिए, नहीं कि एक्सेप्ट करोगे ਇਹ ਵੱਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਸਨ, ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਸਨ, ਉਸੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਸਨ, stubbornness ਆ ਜਾਏਗੀ, ਐਂਗਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲਣ ਜੁਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਗਾ, you get stuck to the place that I will not let go. But if you are following the GPS and it says total acceptance, क्यों? क्योंकि जो बाहर हो रहा है उसके हुक्म विच हो रहा है, अगर वो मनु तकलीफ दे रहा है वो भी उसके हुक्म विच ही हो रहा है। वो मेरे किस वास्ते आया है? वो मेरे एवोल्यूशन वास्ते आया है। He is just a postman, because what I sow so shall I reap. ਜਦੋਂ मैं इंट्रोस्पेक्ट करके एक्सेप्टेंस विच कर दिया, I'm becoming aware, I'm becoming aware of it. So what happens when I'm becoming aware of it? मेरी एक्सेप्टेंस होती जा रही है, मेरा मन अंदर पिघलना शुरू हो जाता है, मेरे ਜਿਹੜੇ ਵੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆहिस्ता ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਰੋੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, मैदान एकदम साफ होता जा रहा है। ਜਦੋਂ साफ हो जाए then for मेरे वास्ते चलना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाएगा।
फिर वो ਜਿਹੜੀ मेरे अंदर जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ अपने अंदर दे वट्टियां नु, अपने stones नु, अपने ये जेडे रोड़ीज इसको खत्म करते जाओगे with the help of the GPS, following all the sub laws, following all the laws of the universe. ये सारे laws of the universe है। What you sow, so shall you reap. What are the cause and the effect? The yin and the yang. ये सारे laws है again. Total acceptance, aspiration, courage, they are all the laws. जिन जिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ ਜੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ, ਇਤਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਰੇਜ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਤਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਇਤਨੇ ਰੋੜੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਦੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। Is it worth it? Is it worth it? No, it is not worth it. This is the house of God. This is the divine power we have. This is my identity. अपने शरीर दे बारे जानो। इसी करके बाहर दे रोड़े नहीं छोड़ के अपने अंदर दे रोड़े देख रहे हैं, क्योंकि अंदर दे रोड़े नूं असीं खत्म कर सकते हैं, असीं अंदर दे रोड़े नूं मिट्टी कर सकते हैं, असीं अपने मैदान नूं सिद्धा कर सकते हैं। जेरे टिब्बे टोए उसको सिद्धा करो, because we have the capability, we have the divine power, we can destroy and then we can create. ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੋ, ਤੋੜ ਕੇ you create a beautiful pathway for yourself. ਉਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਕਿ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾ, ਉਸ ਪਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜੋ। So jin asi logon ne GPS kiya, then what will happen? Slowly, slowly, we are entering into enlightenment. Now, enlightenment is what? Not a use kita enlightenment. Enlightenment is only going from body conscious to soul conscious. Enlightenment is जदों साडा मन जागृत होंदा और मन पता लगा कि मन तो ज्योत स्वरूप है। जदों मन नूं ये पता लग गया कि मैं क्रिएट कर सकता ते मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हां। So that means this is the enlightenment. So now we have understood कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ, which one? पूरी जिंदगी ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। Now it is my humble request to all of you, these all jewels are out inside you. What are these? Become aware, become conscious, take the knowledge, experience it, and become the master of this body. Become the master of this body. When you become the master of this body, what happens? You can control everything. You can control everything. इतु voices आई पता लगे ये मेरा रोड़ा बने की बनिया, और थोड़ा सा भी मन गुस्सा आया ये मेरा रोड़ा बने, ब्लड प्रेशर हाई, शरीर खराब, रिश्ते खराब, सारा रोड़ा बन गया। I'm not going to hold on to this. Make it a thing that I'm not going to hold on to this. So when we do not hold on to this, what do? We let go. AV GPS there. Let go. This is the law of the universe. So when we are using all these, then we are becoming stronger. That ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ. We are not going to be dependent on anyone. We are dependent on ourselves. We are dependent on ourselves. मेरा वो self केरा हैगा वे, और तेरा परमात्मा मेरे अंदर है, और जेरी मेरी identity है, और जेरा मन तू जो स्वरूप है, और जेरा नाम है, और जेरा ocean है, और जेरा तीरथ है, वो मैं हाँ, वो मेरा है। मैं इसनू छोड़ के बाहर दी चीज़ां नहीं लगे, हूँ मैं अपनी चीज़ां। So do not become dependent on this, become dependent on this. Same things are being repeated to you, and we are just actually drilling into you. जदों भी कार बाहर तुहानू कोई पत्थर नजर आवे ना, immediately go and introspect कि इस पत्थर नू असीं तोड़ना है, even करना है ना, तो we are going to follow ना। So that means कि अगर असीं, very simple language I'll use,
कि if we are practicing this, the sub laws, all this we are practicing. You people have all been given these cards of the Naam Simran. This is a rational card which we are giving everyone. When we are practicing this, actually dekha jaye, it very well gels with us Naam Simran card. Why? Because we are actually inculcating all the Rabbi good inside us. Actually, we are inculcating all the Rabbi goods inside us. The Naam Simran is ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫਸੇ ਆ, ਇਵਨ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਲੈਟ ਗੋ, ਸਟਬਨਨੈਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਈਗੋਇਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, we are becoming narcissists, we are becoming such diseased people ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। They will just melt off, just melt off. So you see, this is also English with बच्चे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, this is positive thinking. Simple ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ positive thinking. ਅਸੀਂ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਡ। Simple whole word we ਕਹਾਂਗੇ please incult all the virtues and the values. The next we will say, okay, follow the sub laws. Then what will we say? Okay, take all the superfood. देखो ये सारे टॉपिक्स ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, कोई वखरा नहीं है. Everything we have done. But remember, from the last 6 months, we are just drilling and drilling and drilling and drilling. पर अगर ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਈਏ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, then sorry to say, I don't know when ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ. I have no idea. So positive thinking, children understand. Naam Simran, we understand. Rabbi Gun nu lena, I think we all understand. Superfood. Wave out the, which food? Wave out all the fast food. Which are the superfood? The 21 laws. They are all our superfood. This superfood is in my, they are in my naam de vich hai, oh mere identity vich hai, oh mere us oneness vich hai, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮ ਪਹਿਚਾਨ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਗਈ, so now I am going to unlock and use all of them. Now when I am going to use, then now you have to just do a practice कि भाई incidents are going to come, हर एक incident का consequence जरूर आएगा, incidents आएंगे, consequences जरूर आएंगे. Action will have a consequence. What happens in between? In between, what is there going to be? They say A, B, and C. This is also a way of learning. A, B, C. A, B is what? Whatever is happening outside, whatever you see that is, triggers are coming, situations are coming. एक जगह तो बारू आ रहे हैं, किसी ने तो कुछ बोल देता, कुछ कर हो गई. फॉर एग्जाम्पल सिंपल जी, ए पत्थर है, ये तुम देखिया, तुसी देखिया पत्थर, गुस्सा होगा तो आपने ऐसे करो पर्ल डाल लो, ये उन बारता है. नाउ साडा एक बिलीफ सिस्टम आ गया, B, the belief system. What does the belief system say? Yes, if you wear, no, your anger will go off. So what is going to be the consequence? ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ठीक हो जावांगे, एंगर थोड़ा कट भी जाएगा, किसी वजह से कटेगा, किसी वजह से नहीं कटेगा, but we don't know the consequences किस तरीके नाल है. Is it because of the stone or is it because of our formation to the subconscious mind? किस करके होया? For what? Now that belief system मेरा B है ना, उसको change करो. Now what will be my B system? What will be the B belief system? We are not controlled by the stomach, by the stone, by this pearl stone. We are not being controlled. We have the power that we can control our own angers. Belief system change हो गया. Now जब the belief system change हो गया, now मेरा मन करना, I am that strong. I can have control over my own anger. I know from where it is coming. Now you say affirmations to your subconscious mind. Consequences are going to be very good. But agar belief system thoda galat hoya कि yes, we are dependent on that stone,
कि साडा गुस्सा ठीक हो जाएगा, फिर 2 3 4 6 महीने बाद सारी उंगलां दे विच होर भी पत्थर होंगे, 10 उंगलां में 10 पत्थर होंगे, because we are getting trapped, because our belief system that B is going to corrupt us. Our belief system is what? You where control anger, where shanti milegi, where you will have, this is what all it is done. So you have to change your belief system. The more you change your belief system, you will get excellent, your consequences are going to be very good, you will become very strong, you are going to be very powerful, you are walking actually the correct GPS, you are walking towards your evolution. So when you practice this, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਟਿੱਬੇ ਟੋਏ ਜਿੰਨਾ ਵੀ uneven ground ਹੈ ਉਹ totally absolutely it becomes flat. Now walk gracefully on it. Walk gracefully, ਕਿਤੇ ਵੀ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਗਿਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਚੋਟਾਂ ਤੇ ਹਟਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਗੰਢਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਰੋੜਾ ਵੀ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, situation will become very good. So by depending on the outside stone or breaking the outside stone, कुछ नहीं बनेगा, होएगा तो जेरे अपने अंदर दा, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੋੜੇ ਪਏ ਹੋਏਗੇ, ਪਲੀਜ਼ ਗਿਰਾਓ, ਉਸਨੂੰ ਗਿਰਾਓ, ਇੱਕ ਕੋੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ ਜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, break it so that you start having healthy relationships. ਸੁਖ ਪਾਓ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ. So this is all what you can use and practice during your free time. But keep in mind, this stone dynasty is very, very important for us. Very important for us. ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਏ. तो ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ. ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, I want to have peace, I want to have love, I want to have a beautiful world, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਾਂ. ਅੱਜ ਮੈंने ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ. So all give me a commitment that you people are not going to depend on these stones outside, on these gems outside. Definitely wear if you wear, but not with this that will control my emotions. Do not be dependent on them. Do not be dependent on the thing. See all the thing that is inside you. All the gems and jewels are inside you. उसका इस्तेमाल करो, उसका इस्तेमाल करके उस ऊपर डिपेंडेंट हो, अपने रब्बी गुणा के ऊपर पूरा एक जाने नु लेके अपने अंदर दे सारे रोड़ियां नु तोड़ दो, जमीन नु एकदम सीधा कर दो, टोए टिब्बे एकदम सीधा कर दो, इवन कर दो, फिर खुशहाली खुशहाली चढ़दी कला विच रहो, हाई स्पिरिट विच रहोगे. यही जिंदे जी मुक्त होने वाली गल है कि if you just follow this one dynasty, no, जिंदे जी मुक्त होगे. हाँ जी, now you can take the questions, Arvinder. Yes, any questions from the audience? Someone had asked, if there are sub-laws in the YouTube. Yes, we have all this recording. I think Rimple must be knowing they've already downloaded all of them. You can go into the YouTube. You will get all the laws of the universe. I think we had more than 36 sessions of it. I think more than 36 sessions we had, in which we had done all the 12 laws. We did the spiritual laws and we did the sub-laws. So please go into the in the YouTube, you'll get it. Hanji Pushpa ji. बुआ जी सत श्री अकाल. हाँ, आई वांटेड टू आस्क यू बुआ जी कि जैसे आपने कहा स्टोन्स पहनने उस पर डिपेंड मत करो, लेकिन अगर हम ऐसे ही पहनते हैं, नॉट विद द इंटेंशन ऑफ
कि वो किसी अच्छाई के लिए या कुछ है, क्योंकि तो या डेफिनेटली ये हमारी सोच है। अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं था, मैंने पोखराज डाल दिया तो मेरा तो सारा सत्यानाश हो गया। दिस इज व्हाट पीपल से। हाँ मेनी पीपल से दैट वे, इसको उतार दो ये अरे इससे ऊपर कोई है? आई एम दैट आई एम, इससे ऊपर कौन है? नहीं है, कोई नहीं है। These are mere stones, but you can bear. They have no असर। अब वहमों में भरमों में पै जाओ, illusions में पै जाओ, myths में, then that's your don't bear whatever you want. हाँ जी, हाँ जी, Kiran was there. I think Kiran was there. Hanji Bhuaji, I wanted to ask. हाँ जी बच्चा। Hanji, some time back, someone just told my husband that it is not safe for my son to, either sit on a two-wheeler or even ride a two-wheeler. So we have stopped him from that because, he's a very big astrologer and whatever he says comes true. So he's saying for at least 1 year, we should not allow him to sit on a two-wheeler. Okay, so you mean to say how far it is true? Hanji. Because we are okay not allowing him, but my son is like, I want to meet him, because he does cycling. That's an exercise for him. And he's not able to do that. See what happens now in your family, your husband, you, your son, whoever it is, going to this astrologer, he has told you, okay, कितने ना थोड़े मन में जाके गल बैठते गई हो सकता है तो हस्बैंड दी गल ते बैठ की हो, मे बी यू हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सो हो सकता है कि थोड़े मन ते बैठ गई है, थोड़े हस्बैंड दी गल ते भी मन बैठ गई हो, इनकी जितने भी गल की गल ना मन ते जाके बैठ जाती है, it goes into the subconscious mind. We do not know, unconsciously we manifest it also. It's not that, it is we who manifest it. क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं कि जो तू इसके अंदर रिकॉर्ड करेगा मैं मैनिफेस्ट करा. This is the mechanism of our body. The God has given us a tool. कि be very careful of your chitragup. Be very careful of the subconscious mind. I am giving you the power of the thoughts. You can create, you can destroy. I have given you everything. Now it is up to you. Now, if you have created this thought and it's gone into the subconscious mind, that if he goes on the thing, anything can happen. So for 1 year we will not put it. It is gone. It's gone. और एक बारी नहीं 2 3 4 बारी गल होंदी होगी, जब भी वो मंगदा होएगा तुसी बोलदे होवोगे, वो मंगदा होएगा तुसी बोलदे हो, किसी ना किसी दे दिमाग विच एक गल जाके बैठ गई. The Chitragupta, the subconscious mind says that you have recorded it. Maybe not even having the knowledge that what you are doing. But the law says I will manifest. ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, we never knew that this is how the mechanism work. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ law ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੇਰਾ law ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, I will manifest. So what happened? उसने बोलिया ना होवे, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ manifest ਕਰ ਲੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਖਤਮ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ. You can manifest it. Then the blame games will start. If someone has told me and I said, don't believe in all this, all bullshit, I don't believe it. Chalo bacha, go. Then to finish, because I've already given a message to the subconscious, nothing will happen. But you have got a message. Your husband told, किसी ने कहा है, please साल के लिए नहीं देना. That means the message is already gone. आपने बोला कि we don't believe, but he said no, we don't want it. तो उन्होंने बोला साल के लिए नहीं देंगे. You see, recording ते चल रही है. तुसी मनो या ना मनो, तुसी consciously करे ना, तुम्हें सीधी समझ होवे या ना होवे about this theory, but conscious ते करेगा ना. Okay, I'm not going to wait that you no. मैं तो recording करूँगा. That is the way I made. तो manifest हो जाएगा. Then what will happen? The blame game will start. If you give it, the blame game will start. अच्छा हो गया, तू बन क्या सी,
तो क्या सी? So, but when you go to these astrologers and all, you have to be very careful that at times these astrologers, when they tell us something, you know, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੋਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮੋਟਰਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਡਰ ਕੇ ਰਹੋ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੋਗੇ। You die every day। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨੱਚੋਗੇ ਟੱਪੋਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, then people die every day। मौत आनी है कि नहीं आनी है, कुछ होना है कि लत टुटे कि that is a destiny, but ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਟੁੱਟਦੇ ਪਏ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਰਦੇ ਪਏ। That is why Gurmat says, please stop going to all these places। The destiny is in your hand। If you say, he said it, I don't believe in it, come actually you can, there's no problem, but you have to be careful। नहीं होगा, because you have affirmed that, but you have already affirmed already negative to the subconscious mind। एक अफर्मेशन भी तुसी दे देती और तुसी पूरा साल डर के रहोगे। आज बच्चा थोड़े को नहीं लेगा, हो सकता किसी बच्चे ने मोटरबाइक लेके चला जाए। That is why Gurmat does not agree for these things, that do not go। You die every day। It is not they that manifest the thing, and it is we who manifest it ourselves, because every man creates his own destiny। No one creates your destiny, it is we who create our own destiny। Another question, Pooja. हाँ जी। Yes, Gurpreet Kaur ji, please unmute yourself. जी Yes, बुआ Kiran, जी। are you, one second, Kiran? हाँ जी। Kiran, Buaji, can you ask जी, Kiran? Kiran is quiet। Why are you quiet, Kiran? I think मुझे लगता है she has got frozen। yeah, Frozen हो गई। she got frozen. या तो मेरी गल सुन के frozen हो गई है। No, thank you। हाँ जी गुरप्रीत। हाँ जी बुआ जी, मैं पूछना चाह रही थी, लेकिन you are saying you should not be dependent on the stones and all things, but does it applies to clothes also? Like when we wear white, we feel peaceful, but when we wear black, we feel that we are absorbing negative energies, or we feel low kind of thing. Like some people wear particular colors on particular days. So is there a real connection between our belief body and color? Actually, these are all belief systems। Okay. These are all belief systems। The way you make your belief system, then you go according to it and you try to manifest it। Okay. सानू वाहिगुरु ने इन्ना चीज़ां, सानू गुरमत इन्ना चीज़ां तो सब तो छुट्टी देती रही है। Don't get into these। Don't get into the clothes, don't get into the stones, don't get into the days। Every day is a celebration for us। So, Auntie, that is why it is said we should not be listening to the bad news, and don't read too much of, this negative news and stories around, because they have a very strong impact on our subconscious, and we absorb a lot of negativity when we hear Yes. all this news. Yes, that is why we are on the TVs, listening the whole day the programs, we're listening to the whole day the news, and what are we doing? All this kachra is going to the subconscious mind। और जब ਅਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। Be alert and watch and see। एक इंसिडेंट होएगा, पूरा दिन वो चलता रहेगा, पूरा दिन वो चलता रहेगा। You can imagine सारे सबकॉन्शियस माइंड ते बार एक कोई पिक्चर नो उसको दिखा के लोग कहते जी उन्होंने रियलाइज ही नहीं हो रहा कि एक कोई सीन बार होता पूरा दिन दस। But Auntie, there's a very thin line. Like sometimes when they are very negative movies, you hear the review, and I personally refrain from watching those kind of new movies, because they're very, dark and very low feelings. And then somebody, for example, my husband will only tell me, "You're so weak. It's just a movie. You have to take it like a movie." I said, "No, I can't take it. I'm very sensitive. I can't watch all this. Then I get consumed." So is it my weakness that I'm very weak and sensitive? Okay, somewhere I know I should not. You are very weak। ये तो सारे नाटक है। ये कितने से फंसते पे। Take it as a play।
But auntie, at the same time, बात तो वही हुई ना. We are still watching those negative movies, Yeah, and then that we is should not. definitely. That is what happened by chance. If you see, by chance, negative ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਤਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਯੂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇ ਆਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੀਇੰਗ ਰਿਕਾਰਡਡ. सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है. स्टॉप. ठीक है, न्यूज़ देखना है ना, you see once and finish it off. But we want always the TV to be on. न्यूज़ चैनल रखा रहे, न्यूज़ चैनल रखा रहे. बेशक तुसी कमरे विच होवो या ना होवो, न्यूज़ चैनल रखा रहे. So it's okay to refrain from these kind of Of subjects course, and 100%. movies. 100%, 100%. But auntie, कई बार just, I mean, कई बार ऐसी कोई इस तरह दी गल सुन लेंदे हैं, like especially, I don't know, I heard a very, very negative news about somebody, and I said no, नहीं मुझे ज़्यादा discuss नहीं करना. If somebody was talking, oh, you know, this happened to that guy and this happened, I said नहीं मुझे ज़्यादा details नहीं बताओ. You know I am very sensitive, but still, auntie, I get consumed, and I don't know, I get Because so you are negative. telling to your, because you're telling to yourself, Barbara, that I'm very sensitive. I'm very sensitive. Okay, then I'll make you very sensitive. But auntie, it Finish. plays on my mind. I get it absorbs. But aren't you you, know, aren't you affirming, Bar, that I am very sensitive? I am very sensitive. If your husband tells you that it doesn't drama, it doesn't play, then no, I don't. I'm very sensitive. मैं आंटी किसी XYZ की story सुन के ना, I start, you know, I mean, it starts reflecting. I take it very personally, and and then I'm all the time praying and giving a hedge of protection. Okay, hedge of protection to my kids, to myself. But Nothing. Everybody's protected. One thing you start, bache, just affirming to yourself that I am very strong. Stop this word of sensitive. I'm very sensitive. Words khatam kar deta. Remove this word from it. Auntie, is it in my control? No, of course it's under your control. Give an affirmation. Probably Everything this is something deep emotion. inside in my DNA, which is there since long. No, bacha. I've told you about your genes and DNA. You have the power to change them even if they are there. Yeah. We are now the warriors. Why are you becoming a victim? I'm Become a working warrior. hard on it. Simple tools we are having with us. Stop affirming these things. Even saying we are very strong. Asi nirpau. Asi nirpau, haan. But jaga te darte ho, jaga tu say I'm sensitive, jaga tu I'm very weak, emotions are weak, I get this thing. No. Yeah, you're right, auntie. It's true that you're dying every moment when you are in fear. Yes. That is very true. क्योंकि जो हुआ भी नहीं उसका डर होल्ड करके we are like literally. Yes, there's a fairyland, fairy tales, all been made, all assumptions made, पूरा conscious, subconscious में भी पूरी story रख दी है. वो डर के we are dying every moment. हाँ जी. हाँ जी मधुबाला. हाँ जी मधुबाला. Boji, I just want to add with their question. Madhubala, 1 minute, can I take? Boji, गुरप्रीत ने आपको पूछा कि ये ब्लैक वाइट कपड़े, तो ये रिमेम्बर एक आपने एक बारी वीडियो भेजा था कि जिसमें था कि अभी जो कैथलिक लोग हैं देखो ना, वो वाइट गाउन्स डाल के वो वेडिंग डे वो अपना हैप्पीनेस मनाते हैं, और यहाँ से उन्होंने बोला कि मुस्लिम्स हैं वो देखो वो ब्लैक बुर्का डाल के वो अपना हैप्पीनेस करते हैं. तो फिर ये मतलब वो वीडियो में एक्चुअली ये क्या था कि ये सब मिथ है ब्लैक. Now what happens? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਾਲ ਜੋੜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਵੀ ਪਾਤਾ ਕਿ ਲਾਲ ਲਾਲ ਪਾਓ. Now to break this, people have worn white suits, ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਗਏ, just to break the myth. No difference. तो बोझी ये मिथ ही हुआ ना, मतलब वही सोच ही अलग अलग है ना. वाइट डाल के वो वेडिंग में जाते हैं, ये लोग ब्लैक, तो ये मिथ है और ये कस्टम्स बन गए हैं. रिलीजन्स ने अपने कस्टम्स बना लिए हैं. इट्स अ रिचुअल कि ओके यू हैव टू डू दिस. Yes, actually these are all belief systems and all we have created, nothing else.
मुझे एक और था जिससे मैंने इनके क्वेश्चन में ऐड, प्रिया जैसे बोल रही थी कि मैं ऐसी मूवीज नहीं देखती, तो भाजी अभी ये बात भी तो होती है ना कि रात को ऐसी मूवीज मत देखो, फिर वैसे ही हमें सोच चलती रहती है हमारे दिमाग में। तो क्यों हो गया, जैसे मैं भी फिल्म, जैसे अभी कौन सी मूवी आई है पता नहीं, एनिमल, मैंने नहीं देखी, जबकि सब बोलते बहुत अच्छी है, मगर Exactly, I was talking वायलेंस है, about that movie only. इतना वायलेंस है, I मैंने नहीं देखी, मैं देख ही नहीं पाऊंगी बाजी, मैं क्यों देखूँ वो See, कर। I'll tell you one thing. I'll tell you one thing. Don't think I don't see movies. They're chitte wal to again, but I also see movies. हाँ But when I see these movies, no, my intent is very different. For example, when I was seeing Good Doctor, my focus was all on the autism. So many series went, I wanted to see what was the series, what was the autism, and how the beauty in the movie it showed. But my focus was on कि autism ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ because ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਐਨੀਮਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਕਿ you must see and all, you have to see the animal inside. I am going to go and see it because I want, and बड़े लोगों ने किया कि ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਐਨੀਮਲ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। So they told me yesterday only, say, Ma, go and see, maybe you'll find out. I said, yes, I am going to go. Because these type of animals that rise, now our perspective of seeing a thing is different. You understand? We see it in a very different way. So what happened, that intent has to be very different. We go, we do a lot of research. ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ देखते हैं, कुछ ना कुछ भी pick up. एग्री भोजी, हम अपने साथ उसको रिलेट करेंगे, जैसे पिंकी, मुझे मालूम है पिंकी ने बोला, तो भैया भोजी कुछ बहुत एक्सेस दिखाते, मानते हैं कि निर्दयी इंसान है, वायलेंस है, पता नहीं भोजी। Auntie, in your case, you are very strong. आप introspection, contemplation के way से अपने different perspective से जा रहे हो. But we, when we Yes, probably I we know. are not that strong, Yes, yes. things You have affect to be us. that They hit strong. us. You have to be that strong. You have to be that strong if you really want to learn something. You want to learn something. मुझे ऐसे कोई दया नहीं आती उनपे, वो तो पता है मूवी एक्ट करे, पर बहुत ज्यादा एक्सेस दिखाते हैं इतना हिंदी मूवीज में भोजी, वो भी तो फिर लगता है ना ऐसे। नहीं, पर वो लगता है आपको, पर ये हो रहा है ना. This is all what's happening. All this is happening. वो तो आप लेने वाले ना एनिमल डायनेस्टी में, एनिमल मूवी पूरी है हमारी। I will be taking, yes, definitely. यस Then you will मतलब, see all the animals running inside you. I will show Yeah. you those. Let me come on that animal day. Okay. Okay, जी. Madhubala, हाँ जी, जी please जी come on. जी बुआ जी, हाँ जी. सत श्री अकाल बुआ जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल. बुआ जी, I have been listening to you from quite a long time, and I'm trying to implement many a things. तो जैसे मैं like I tell others also about it, and in the sense, in the turn, I try to remind myself also, okay, I have to follow this path, I have to follow this path. And like for example, I tell them, no, let's, कि हमें अपने आप को शांत रखना है। शांत रखने से हमें जो प्रॉब्लम है, वी डोंट हैव टू होवर ओवर द प्रॉब्लम, बट वी हैव टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। सो Yes. बुआ जी, आई हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग कि कितने लोगों का या मेरा भी हो तो मुझे इंस्टेंट सॉल्यूशन आता है, एंड आई कैन सजेस्ट। सो लाइक आई स्लोली स्लोली, ऑफ कोर्स वो कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, बट इफ वी ट्राई टू, डेफिनेटली इट कम्स। तो जैसे आपने ये बिलीव्स का बोला, ये स्टोन्स का, कि हम उस पे कंट्रोल कर सकते, लाइक मैनिफेस्टेशन, अगर वी बिलीव इट इन द एक्सट्रीम वे, लाइक इससे मेरा किसी ने पॉइंट आउट कर दिया कि ये तुमने ये पहना हुआ है, ऐसे मत पहनो, इसकी वजह से हुआ है, तो लाइकवाइज हमारा दैट मैनिफेस्टेशन ऑफ गेटिंग इनटू कि अरे हाँ, ये मैंने पहना है इसीलिए मेरा अच्छा हुआ है, ये भी धीरे धीरे बिलीफ घर कर जाती है, एंड देन वी स्टार्ट, डोंट वी स्टार्ट मूविंग इन दैट लाइन अगेन, where we have to again control and bring out ourselves that this we have to wear only for the outer beauty, not for the inner beauty, right? Yes. Bua ji? Absolutely, yes. So that way you can wear whatever you want. All your jewelry you can wear. But ये इंटेंट से नहीं पहनना कि भाई ये मेरे अंदर इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। Correct. हमने इसलिए पहना बिकॉज आई लाइक इट, Correct. आई लाइक, आई वांट टू वेयर, इट्स ओके, इट्स फाइन। बुआ जी, ये तो हमको है ना, स्कूल में भी आई
recollected we had a lesson in Hindi. It was in 8th standard or which standard I don't remember. कि ये through some animal stories or whatever it is, हमें वो lesson पढ़ाया जाता था कि शेर को कहा जाता है, I would like to just share in a minute कि शेर को जब कहा जाता है कि जंगल का राजा है, तो उसे भी किसी ने बता दिया कि तेरी मौत इतने दिनों के बाद निश्चित है. तो what happened? He fell into the well and उसने ना फिर उसके दिमाग में ये घर कर गया कि मैं तो मरने वाला हूँ, मरने वाला हूँ. उसने कोशिश ही करना छोड़ दिया. कितने दूसरे उसके दोस्त ऊपर से उसको चिल्ला रहे थे कि आ जाओ, तुम कोशिश तो करो, बट ही वाज सो लाइक विद दैट बिलीफ कि उस पे आके फिर सारे मच्छर ये वो सारे भिनभिनाने लगे एंड देन ही फाइनली डाइड. तो हमें तभी से ही सिखाया जाता था कि वी डोंट हैव टू बिलीव दिस, लेकिन कहीं ना कहीं वो छूट जाता है. वी स्टार्ट फॉरगेटिंग. We're So this is forgetting. the right, this is the Yes. right platform where we get back again to Yes, those absolutely. and we Yes, start we to do. collect. डोलते हैं, get up. डोलते हैं फिर. We If have someone to. asks that is the charms and all are good luck and all, please get out of it. Correct. We Right. ourselves are good luck. Yes, yes, We yes. ourselves are good luck. We don't need Yes. anyone's good luck. Yes, yes. We have to Your make our. good qualities, your abiding with it, all are my good lucks. The charms Correct. are all my own. It's mere virasat mein. Please don't get into all this. You're most have- welcome to wear it, but don't think that they'll bring you good luck. We have to rise above all All this. these, yes, good luck will only come with your own virtues. Yes, 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 Buaji. Right, Buaji, I have one small clarification. Anji. This Kiranji was talking about the astrologer and husband telling her about the two-wheeler business. But point is that solution is again with that astrologer itself, how it can be solved. That is there in their mind. So if he has created that, he has a solution, he must give some alternative. So better go But back to he said 1 year no more driving. But point is, if you now the way you explained that you may take somebody else's vehicle and go, and still it can happen. So if he explained that, the astrologer has to also find a via media somewhere. He cannot be stubborn. No, but then when they go to the astrologer, no. So अगर तो वो astrologer है, who makes money, then वो कहेगा हवन करा लो. मैं आपको हवन देता हूँ, हवन करा लो. Okay, तो but ऐसे करते- that will solve 1 year's problem, no? This is- That solve 1 year's problem, no? Problem is, some solution he only has to give. Then otherwise, these people have that in their mind that if something happens, they won't sleep. Yes, they're not going to sleep. That's all. Why So, don't so they not you, going you, to- you have to find a solution. First of all, going to him itself was wrong. And once you have gone there, you have to find a solution through him only. Yeah, usually they do give a solution, but they said no कि 1 साल के लिए नहीं जाना. That's what हाँ they ठीक told. है. अभी वो ये अगर ऑल्टरनेटिव दूसरा सोच के बताओ, और उसका बाप कोई रहेगा एस्ट्रोलॉजर का, उसको पूछो. So Kiran, you can tell your husband, please tell me, and tell me, give me a solution. हाँ, because there has to be a solution. Every problem has a solution. ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में जिसको solution नहीं है. Okay. Thank you. Okay. Anji Madhubala. मधुबाला का हो गया बुआ जी. Okay. Any other person? Any question? Please raise your hand. और बुआ जी एक क्वेश्चन ना चैट बॉक्स में भी आया था. हाँ क्या? I'll share. बुआ जी, what is your thoughts on the charms bracelet? I told, वो बताया ना, वो जो charm bracelet ऐसे सब brings us good luck. Okay, okay. ठीक है, हो गया ना? These are all myths and all. These are all myths and illusions. This is all depending. काम हमने करना नहीं. Good luck तुम ले आओ. पढ़ना हम है नहीं. पेन अच्छा वाला लेके बाबा जी के सामने रख दो तो पेन पास कर देगा. नहीं, sorry. For your own good luck, for your own, and for you have to make your own effort. These things will not do. तो बुआ जी फिर ये सारे मिथ है ना, जैसे एग्जाम्स के टाइम पे बोलते थे दही खा लो, अच्छा गुरुद्वारे मत्था All टेक. myths.
So these are small things which we have to break. When we break, no, we are actually taking back our power. You break another myth or an illusion, you're taking back our power. Slowly take back all your powers. जो अपने लोगों को दिया होता ना, ये पत्थरों में, बार में लोगों को, और ये परंपरा, ये सारे अपने powers उनको दे दिए, सारे powers अपने लोगों को. All this reminds me of that movie PK, where he talks it's a wrong number. Yeah. Which one? PK. PK, there was a movie where he talks about wrong number. Yeah. So whatever the astrologer is telling is something telling he's not connected properly. So tell him to connect properly, do it. So it's a wrong number he's quoting. The big illusions. Yeah, so everything. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ illusion ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ, yeah, I have broken this belief system, तो मैं ਕੀ ਪਾਇਆ? You have taken your power back. You break another system, you're taking your power back. So you can imagine how many, where you have given your powers and you're being controlled by it. Yes. Take your powers. Very true. We can only do that only if you think yourself to be the divine power. Please, please, please. You are the divinity. You are, I am that I am. I am the walking, talking God. I am what? I am Mantu Jot Surup hai. I have them, the creator, I am the sustainer, I am the destroyer. I create my own destiny. I will not give my power to anyone. I will destroy all the belief system and create a beautiful world and create a beautiful destiny. Speak it up. Have that power to speak. Yes, Roshni ji, please unmute yourself. Roshni Kishore. She raised hand, but I think due to some Anji, there's some problem in the thing. Yeah. Some problem. Namaste, Buaji. I'm first time in this thing group. I'm so happy to hear your voices and see your faces. Thank you so much. My friend Amandar has just told me about, today only she told me about this group. In fact, I called her yesterday to ask her, I want to learn more about Sikhism. Okay. She said, अरे हम तो एक ग्रुप में है, तुम ज्वाइन करो तेरे को पता चलेगा. I don't know why I'm a Sindhi, but from childhood my mother's been doing seva of Guru Granth Sahib Ji, when we were small. So I told her, I don't know, my mom just passed away, 6 months has been. So I don't know, some feeling came that I should know more about Sikhism, no? She said, aa jao, join kar lo. So Okay. I'm so happy to be in this platform. Thank you so much, Buaji, and thank you each member. I just have one question. I've been hearing Rinku Veerji, I keep hearing his satsang on YouTube. So he's saying we have to get up in Amrit Vela. That is really good, to wake up in Amrit Vela. Yeah. So I want to know more about that. See, About your view. Yeah. see, what he's saying is right in his way. Everyone way of thinking is right because everyone in the different platform. Amrit Vela is very good in the morning if you get up because koi shor sharaba nahi hai. Peace is there, freshness is there. So then what happened? No disturbance and all. Then you can do what you want to do at that time. Okay. But that much it is. That is what you can do. That is what people think and people are doing. But according to the Gurmat, they say, Amrit Vela, such now, vadiyai vichar. Amrit Vela kera hai jadu tusi us sach nu dhyan deo. The day you connect to that oneness, we have to connect to the oneness 24 hours. Not in the morning. अगर हम खाली सवेरे को कहते हैं अमृत वेला, तो इसका मतलब तू ठेकेदार बन गया, पूरा दिन जो मर्जी करे. मैंने तो अमृत वेला कर लिया, अब तो मैं पूरा दिन ठेकेदार बनूं, मैं जो मर्जी किसी को चोटे दे दूं. No. Amrit Vela means that 24 hours you have to be connected to the oneness. Now, how do I connect to the oneness? He has no rang roop, कुछ भी नहीं है. He is residing inside me only. कौन सा गुरुद्वारे मंदिरों में है, वो तो मेरे अंदर, ये सबसे nearest तो मेरे पास ही है. So how do I connect to him? Just abide, incult into yourself the godly wisdom, और वो जो उसके virtues हैं, जो गुण हैं,
और रब्बी गुण जो उसको खाली अपने अंदर करो. Love is God. Forgiving is God. Gratitude is God. Total acceptance is God. These are all the virtues. So जैसे जैसे situations आती हैं, हम total acceptance में चले जाते हैं. This is God. I'm connected. किसी ने मेरे को कुछ कह दिया, no problem. I forgive her. इसको अमृत वेला. बुजुर्ग को कुछ हो रहा है, उसको दर्द है, मैंने उसको पानी लेके दिया. माता जी, are you fine? मेरा अमृत वेला है. This is my amrit vela. Understand this. It is a very big myth that we people have created of amrit vela. We are not going to impose anything on you people, but my request to you people, please read for yourself. Read for yourself. Understand and walk, and don't get trapped. Why? Because ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ, 2:30 ਵਜੇ ਜਾਓ, ਪੂਰਾ ਚਾਨਣਾ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. But what are we carrying? What are we carrying with it? ਕੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਈਗੋ? ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ. ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈਗੇ, ਜਿਤ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ. ਹਾਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹਾਂ. ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ. When I handle a situation, ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ is that. ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਦਾ time definitely it is a very cool peace morning time. You get up because ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ Babiya Amrit Vela. There are. Everyone gets up in the morning. This is a natural process. In every religion, all get up in the morning. Even a bird gets up in the morning. You can hear the cuckoo in the morning. This is the way the universe is made. But don't say this Amrit Vela is the only time where you can worship. Apne Amrit Vela nu sambhal lo, taki pura din ठेकेदारी करते रहो. That's my way of thinking. बच्चा, मैं अगर बुजुर्गों को भी संभालिया ना, मेरा अमृत वेला हुई है. मैं अपने फैमिली को संभाल, मेरा अमृत वेला हुई है. किसी ने चोट देता मैं उसको माफ करता, मेरा अमृत वेला हुई है. मैं किसी गरीब को गले लगा ले, मेरा अमृत वेला हुई है. मेरा अमृत वेला पूरा दिन चलेगा. Because Sikhism says कि कोई भी टाइम, हर टाइम ही वधिया है. Every day, every time is a celebration for us. Such a beautiful answer. I'd like to learn more and more from you all. Yeah, thank you so much, Buaji. God bless you, bacha. Love you, bacha. Love you. So I think now we should wind up, as I have to go to another session now. Yes, Buaji, very truly you said. So they said the past is a stepping stone, not a milestone. So very Yes. truly someone said like this. So thank you so much for the wisdom you shared with us. And One question I have got this. Tomorrow again, do we have a session? Yeah. One thing announced. We are going to have these 8 sessions. No, Now the that's next not because the poster does not say anything about it. No. We will be sending it every day. Now the next 2 days is going to be the plant dynasty. 2 days plant dynasty. Okay. Saturday, Sunday is going to be a holiday. Then Monday, Tuesday is going to be the animal dynasty. Fine. Then the next 2 days is going to be the human dynasty. Human dynasty. So we're having the 8. Saturday, Sunday is going to be a holiday. But we will be sending you every day in the morning. The links and all will be coming fresh to you. Okay, thank you. so much. Thank you. God bless you. thank you, Buaji, everybody. Smile. Yeah, on your We are camera. all melting. All the stones are going, melting. Smile. Take out the picture. Come on, Rimple. Take out the picture of everyone. Yeah, so please put on your cameras, Mandeep, Kanwaljit, Put on your Vishali. cameras. Yes. All Ranjit. put on your cameras. Cameras, please. Yes. Ranjit, camera, Zoom user. All Mandeep, of you. Gurina, please. All. Yes, I can see the smile. Come on, Guneet, smile. Give me a broad smile, Guneet. Come on. Madhu. Yes. Rimple ma'am, can I take? Why are you in the darkness? Can I take this opportunity to ask one about the Gurmukhi class, that whether there will be any in the future any weekend classes? Because Yeah, now sorry.
Thank you so much, Madhubala. I'll take this opportunity, Bhuaji, that Thank you. today only I posted in the community group. So yeah, our Gurmukhi classes are going to start from January, 8 January. Regular class Monday to Friday, 2:30 to 4 p.m. And weekend class is also going to start in the month of January. मैं सारे अभी लिंक्स भुआजी मैं आपको डाल दूंगी, आप स्पिरिचुअल मसल्स में डाल देना आज। तो वीकेंड भी चालू होने जा रहे हैं सुबह 9 to 11 which I'm going to take it, and रेगुलर भी चालू होने जा रहा है आफ्टरनून 2:30 to 4. थर्ड बैच संध्या क्लास गुरबानी बुआजी थम्स अप कर रहे हैं, हमें सबको ही करना है। सो रीडिंग ऑफ संध्या गुरबानी गुरु ग्रंथ साहब जी इन 5 months वो भी चालू होने जा रहा है। सो मैं सारे पोस्टर्स कम्युनिटी ग्रुप में बुआ जी अपने स्पिरिचुअल मसल्स में सब डाल देंगे। जितना भी आपको स्प्रेड करना है, यू कैन स्प्रेड अ वर्ड। दोज हु वांट टू लर्न दे कैन लर्न फ्री ऑफ कॉस्ट एनी कोर्स जीवन जाच। Thank you, Rimple ma'am. Thank you so much. My pleasure. Thank you, So, Bhuaji. okay, meet you tomorrow at 7:30 sharp with the plants now. Now the stone is gone, now the plants are going to come. Okay? So, Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Thank you, Auntie. Thank you so Welcome. much. God bless you. All Love you. my soul sisters and brothers Love from you all. Love you. all